Please write in the chat box. Okay. So I get a few thumbs up. Many people want to come out of it naturally. So now we need to know how to come out of it naturally without any external intervention. होता क्या है जो आपको पेन्स एंड एक्स आज फील हो रहा है, it has started long back. 25 to 30 years back, all these kind of pains and aches have started. Difference itna hi hai कि आपको पता नहीं चला, and as you age, especially for the women folk, as they work towards their menopause, lot of problems surfaces up. So the degeneration is at a faster pace and the regeneration is not up to the equal amount of degeneration. So the imbalance and what you feel is the pain, the inflammation, the stiffness, which is creating problems for you in your day-to-day life. So how many of us have been having pills day in and day out, painkillers? कितने लोग painkillers खाते हैं? Participants may say, how many of y'all Dr. Chaurasia, please log out and log in again. How many of us have been taking painkillers or some sort of medicine because of our pain for years together and still we have not got any relief? Okay, rarely. तो कुछ लोग सहन करते हैं, that is very good. Myself, okay. So here there are a lot of people who are taking painkillers और सभी को मालूम है पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो आपको आज तो नहीं समझ में आएगा बिकॉज यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट अवॉइड, सो यू आर टेकिंग पेन किलर्स. सो इफ आई हैव योर परमिशन, आई विल just tell you in my presentation how you can come out of your present problems and lead a medicine free life. So if I have your permission, can I share the screen, please? Okay, thank you so much. Just give me 2 minutes and I'll share the screen. Okay, can everybody see the screen? Yes. Just a second. Okay. Ashtaang Chikitsa online therapy for neuro musculoskeletal problems. तो न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, इस चीज के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अष्टांग चिकित्सा ऑनलाइन थेरेपी. सो लेट्स सी व्हाट कम्स फर्दर. Namaskar, I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So in today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. तो अब आपको लग रहा होगा कि इंटरनल ऑर्गन से क्या लेना देना है external pains ka. Abhi, going further, in Swamiji's video also you will understand how the external pain is connected with our functioning of the internal organs. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi and a human exponence expert. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India,
but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer, जिसका हम सभी लोग जानते हैं आज तक भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So, what do we mean when we say the structure of the human body? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. Profound way of addressing the aspects of a human body. Just a sec. Now let's come to the fact as to who is this webinar for? Strange question, right? But of course, this is very, very important. This is for people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, and many people said they are actually looking for a natural solution to work upon their bodies and come out of their current problems. So, people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So, reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa, freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the Ashtasharir or the 8 sophes in the human body. So now let's see what are the 8 sharir or the Ashtasharir that our human body is made up of. Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. तो जब हम लोग न्यूरोमस्कुलर हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं वी आर मेनली कंसर्न विद द प्रकृति एंड द विकृति शरीर यानी कि प्रकृति विच इज नेचुरल दैट इज द रीजेनरेटिव फैक्टर इन आवर बॉडी विकृति इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द डीजेनरेटिव फैक्टर इन आवर बॉडी तो होता क्या है जब इम्बैलेंसेस होती है रीजेनरेशन और डीजेनरेशन में तब आपको पेन इन्फ्लेमेशन स्टिफनेस वगैरह वगैरह सब आपको महसूस होता है और दिखाई भी देता है सो अष्टांग चिकित्सा कैन हील some of the most common problems that we see among our participants and in our daily lives even youngsters are now suffering from these kind of problems which was of course all these problems were seen post 60 or post retirement but abhi to koi age hi nahi hai problems ke so knee pain lower back pain hip issues pain in the leg drop foot spine related issues slip disc disc bulge weak spine spondylitis frozen shoulder or drooping shoulder tennis elbow rheumatoid arthritis osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So, Ashtang Chikitsa can also heal certain very, very chronic problems or diseases, muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome. नाम सुनते ही कितना भयानक लगता है. Spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease or dementia,
One of the most common problems seen today is Alzheimer's or the dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. हम कैसे अपने करंट कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं और वो भी naturally without taking anybody's help but working on the human system. Thank you so much for listening to me patiently. I'll just tell you about how we will proceed in the webinar. First, you will be listening to the recorded webinar, recorded video of Swami Raj Vibhuji, जिससे आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप अपने करंट प्रॉब्लम से खुद ही बाहर निकल सकते हैं. हाँ, बट उसके लिए आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा आपके शरीर पे. Then we will invite somebody live who has been a participant of Ashtaang Chikitsa to share his or her journey of Ashtaang Chikitsa. Of course, we are going to share the program details after this. And in between, quickly note down all your questions so that after the webinar, we can get it answered in the class groups. So please note down all your questions and your phone numbers. Thank you so much. Namaste. Over to Anilji to share the video. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विद अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing,
if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different?
Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti, and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage.
What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is
disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of Cowdy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapta Dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है.
आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को, देयर इज नो मेडिसिन, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन, दवाई हो ही नहीं सकती है। सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक। 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है। एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवनेट योर ऑर्गन, एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला। सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें। नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से, मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड। जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए। हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड। करके देखिए दोबारा, अगेन डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड, यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर, यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए, हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इनसाइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions.
muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your murmurs are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma, Ashtaang Chikitsa में, there is a part in Ashtaang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, how do you control this movement?
by holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए, yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's very temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85%. It's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as
Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking about genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S.
You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently.
Now I would like to invite Aarti Thapa ma'am to share her journey of Ashtang Chikitsa. Aarti Thapa ma'am, are you able to hear me? Yes, yes, ma'am. Thank you so much. We'll just put you on spotlight. Can we have Aarti Thapa ma'am on spotlight, please? Spotlight, ma'am. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Yes, ma'am. So you can talk about what was your condition when you joined Ashtang, before you joined Ashtang, and after you did your course, what is your condition now? See, I'm still doing my course. I'm in the Okay. Pitta group right now. Okay. Before I joined this course, I have a rheumatoid problem. Okay, rheumatoid arthritis. I have thyroid and high BP is there. And I'm obese, as you know. I used to do a lot of, like yoga, exercise I wanted to do to come out of my problem. But somehow or the other, what was happening was I used to start any program with a full enthusiasm, and then I used to just, lose interest on it. So one of my friend told me this Kumbhak therapy, this thing is basically on breathing. And somehow I had the belief that, breathing, right technique of breathing can help us. So crossing my fingers, I just joined this course without any expectations, because I thought that, if I expect, I usually get, disheartened. And as I joined the course, I think on the third day, I was feeling energetic. My knee problem had lessened, and my walking, like if I sit for long and if I just immediately get up, so I used to have a problem. I meant to fumble karti thi. So I had to stand, for some time and then walk. So I saw that, but I couldn't believe that ye mere mein ho raha tha. So I gave it a time. So now I'm about to finish the second thing. The Vata hum log ne kiya 3 weeks, and then we are in the Pitta. This is my third week of Pitta, and then we'll go to another module. So now I feel I'm happy. My level of energy has really gone up, and my pain has subdued. So my walking also, if I sleep after getting up early in the morning, I don't fumble. Or if I'm sitting somewhere for long, I can get up and I can immediately, if I don't walk, but I can walk. And even my steps, when I used to come down, I used to really walk like an old person, like one step at this time. So now I see that, so I feel good. And rest, I'm really skeptical, because I'm quite I think that mere nazar na lag jaye, so I don't like to talk much. So mujhe jab aaj bola gaya tha, I was a little hesitant, because I thought ki is it too, like once I say and I might not, but then I thought no, if I am benefiting, if I can come and accept that, so that will be, I'll feel good. That's it, ma'am. And the other thing, Thank you so much, Aarti ma'am. It was wonderful to hear about your story, and I'm sure once you approach your customization and you start doing your customization, you'll get better and better. well, yes, yes. Thank yes. you so much for giving us time and joining us. Now, I would like to invite Abhinav sir to please share his journey. Abhinav sir. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? Hello. Yes. Good evening. नमस्ते Namaste. मैम, भरोसा भगवान पे भी बहुत बढ़ गया है। मैं 10 साल से प्रॉब्लम में था। मुझे लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस दोनों है, और शायद अब साइटिका की भी प्रॉब्लम बढ़ रही थी मेरी।
लेकिन पता नहीं कैसे मैं तो थक गया था। मुझे तो फेसबुक पे सजेशन अवीसा का आ रहा था कई बार कि गेट रिड ऑफ मेडिसिन एंड पेन। तो मुझे लगा बाकी जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं वैसे ही मैं इस बार भी बेवकूफी बनूंगा। लेकिन बिलीव मी, ये मैजिक है। मैं आप जितने भी लोग पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि पहला जो ख्याल मुझे आया था इस चीज में आने से पहले, मुझे लगा था कि ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है वो कैसे नी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, या मेरे पेट की प्रॉब्लम ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कैसे सॉल्व कर देगी। लेकिन नहीं, ये मैजिक है, मैजिक ही मैं बोलूंगा इसको। मेरी प्रॉब्लम फुल्ली रिजॉल्व तो नहीं हुई, अभी मुझे 9 वीक्स हो रहे वाले हैं कुंभक के। लेकिन आप मान के चलिए मैं 60 to 70% एकदम ठीक हूँ। मॉर्निंग की स्टिफनेस थोड़ी रह गई है, बाकी चीजें खत्म हो। जो मैं पेन के साथ जीना शुरू कर दिया था वो चीजों से मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैंने समझ लीजिए मैं किस हद तक डिप्रेशन में था कि मैंने पेन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था कि नहीं अब इसी के साथ ही जीना है। मेरी उम्र केवल 36 साल है। अब मैं जो दूसरों को देखता था तो मैं मतलब एक दो बार तो मैं डिप्रेस भी हो गया था, रोने जैसा भी हो गया था कि पता नहीं कभी ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ। होप भी बहुत बढ़ गई है, एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया है। मॉर्निंग में उठ भी जाते थे तो लगता था कि नहीं ये काम एक बोझ जैसा लगता था। अब तो 6 बजे उठ जाते हैं, करवट लेने में भी लगता है कि नहीं यार क्या लेटे हुए हैं, चलो कुछ काम ही निपटा लेते हैं। वो एनर्जी लेवल दोपहर में खाने के बाद में मुझे नींद आने लगती थी, वो भी अब नहीं आ रही है। मैं लेट भी जाऊं तो भी नींद नहीं आ रही है मुझे। और उस रात में हार्डली मुझे 11:30 हो जाते हैं सोते सोते, और मॉर्निंग में मैं 5:30 6 बजे के करीब मेरी नींद खुल जाती है। तो ये सब मैं सबसे ये चीज रिक्वेस्ट भी करूंगा और बोलूंगा कि देखिए आप लोगों ने बहुत जगह पैसे लगाए होंगे, एलोपैथी में मैं सब कर चुका हूँ, मैं जानता सब हो के आ गया हूँ। किसी ने मुझे कुछ क्योर नहीं कर पाया। फिजियोथेरेपी से थोड़ी राहत मिली थी, बाकी सब पेन किलर दे रहे थे मुझे। मुझे पता भी नहीं था कि उन सब चीजों में पेन किलर इन्वॉल्व है। तो आप लोग प्लीज इस पे जाइएगा। इतना पैसा आप लोगों ने इधर उधर लगाया होगा, लेकिन आप प्लीज इसको ज्वाइन करिएगा, आपको पक्का रिलीफ मिलेगा। बस यही मुझे कहना है। आई होप सब लोग ठीक Thank हो you जाए। so much. Thank you so much, Abhinav ji, webinar join करने के लिए. It was wonderful to hear about your journey of Ashtang Chikitsa. Over to Anil ji to share the program details for which the participants are waiting eagerly. Okay. Just give me a few seconds. Yes. Okay. Are you able to see my screen, Rachna ji? Yes. ठीक है. All right. So without wasting much time, we'll get to know the program details, which a lot of you may be waiting for. काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रोग्राम के बारे में जानने की. जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं कैसे क्लासेस होंगी एंड बेस्ट ऑफ ऑल कि इसका फी क्या होगी. ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसके लिए लोग रुके होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स. ये कुंभक मेंटर्स हैं, स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं जो आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं. ओके. प्रोग्राम मॉड्यूल्स जैसा कि स्वामी जी वीडियो में बता चुके हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं. मॉड्यूल 1, 2 and 3. देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन द होल प्रोग्राम. Module 1, 2 and 3, or you can call them Vata, Pitta and Kapha module. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. हर एक मॉड्यूल की ड्यूरेशन जो है 3 हफ्ते की है, और टोटल जो हो जाती है तीनों मॉड्यूल्स को मिलाकर 9 हफ्ते. 63 days is the total duration of the program. If you see here, it's in the program overview, 9 plus 1 week. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while. एक एक्स्ट्रा वीक क्यों है, एक एक्स्ट्रा हफ्ता क्यों जुड़ गया है, हम थोड़ी देर में जानेंगे. Classes, there'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring or the practice class. इस प्रोग्राम में हर हफ्ते 9 हफ्ते के लिए हर हफ्ते 2 क्लास होंगी, जिसमें से एक लर्निंग क्लास या मेन क्लास कहलाती है और दूसरी मेंटरिंग या प्रैक्टिस क्लास. अगले कदम आपके क्या हो सकते हैं? What are the next steps? You pay the program fee
and there is a special webinar pricing for people who have stayed back. एक special webinar pricing है उन लोगों के लिए जो अभी रुकेंगे till the end of the webinar. After that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credential for course access. What is this course access? ये course access क्या है जिसके लिए आपको login ID create होगा, वो भी हम थोड़ी देर में जानेंगे. And then you start attending your classes, starting with module 1, then module 2 and module 3. Or all 3 modules have to be completed. There is no choice because it's the combination of all 3 modules makes the whole program. पूरे तीनों मॉड्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा प्रोग्राम बनता है. चूज नहीं करते, यू हैव टू डू ऑल. सभी आपको मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं. मॉड्यूल 1 6 क्लासेस, मॉड्यूल 2 6 क्लासेस एंड मॉड्यूल 3 6 क्लासेस. ये सभी के लिए कॉमन इन द सेंस देयर आर सेम नंबर ऑफ क्लासेस, सो टोटल 18. 6 क्लासेस पर मॉड्यूल into 3 modules makes it 18 classes, 18 learning, and then 1 customization class. What is this customization? You'll get to understand very shortly. Then total engagement becomes 10 weeks. Batch 124 starts on 3rd April, which is a Monday at 6:30 p.m. 3 अप्रैल जो कि एक सोमवार का दिन है 6:30 बजे शाम को बैच 124वां शुरू होने वाला है. इसके लिए आप एनरोल कर पाएंगे. ये मेंटर क्लासेस है. मेंटर क्लासेस यानी प्रैक्टिस क्लासेस. सो मॉड्यूल 1 की मेंटर क्लासेस होंगी थर्सडेज को, मॉड्यूल 2 के लिए फ्राइडेज को और मॉड्यूल 3 के लिए सैटरडेज को. ये सभी डिटेल्स हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप चैट और यहाँ जूम चैट के ऊपर. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जैसे आप समझ चुके होंगे अभी तक, these are live sessions which are conducted on the Zoom app. In the practice class and the main class, the mentors watch all the participants. आपको कैमरा ऑन रखना होता है ताकि हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको देख पाएं कि आप क्रियाएं किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये ऑनलाइन प्रोग्राम है तो इसमें चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं. सो बट वी हैव टेकन ऑल द स्टेप्स टू मेक श्योर दैट यू डू द क्रियाज करेक्टली. सभी हमने इस तरीके से प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि हम देख पाएंगे और आपको पूरा गाइड कर पाएंगे कि आप सही तरीके से क्रियाओं को करें. देन रिटन इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन इंग्लिश एंड हिंदी. हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं और सेशन रिकॉर्डिंग या क्लास रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होती है जो आप बाद में देख सकते हैं. काफी एक्स्ट्रा चीजें होंगी इसमें. देयर विल बी मेंटल प्रैक्टिसेस, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव. माइंड यू दिस इज नॉट अ डाइट प्लान बिकॉज डाइट प्लान्स डू नॉट वर्क for the simple reason that everyone's body is different, their system is different, their functioning is different, so there can't be one formula that will apply to all. So this is a diet perspective in which you'll get a video from Swamiji in which he explains how to use food in the best possible way so that it does not harm you. This is a diet perspective, not a diet plan. There are no dietary restrictions. Many people ask us if there are any dietary restriction or if they have to किसी को परहेज करना होता है क्या डाइट के तरफ से. ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें. देन देयर विल बी सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस और काफी नॉलेज शेयर की जाती है सभी लोगों के साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम. Yearly expenses, let's look at how much you may be spending just to manage your disease. These are yearly expenses on the disease, to manage your disease that you are into, and in doctor fee and everything. Why I'm sharing this is because so that when I announce the fee, you can compare these two things. Normally हमें कंपेयर करने की आदत होती है, चाहे वो थेरेपी हो या कोई प्रोडक्ट हो. तो एक बार ये जान लेते हैं कितना शायद काफी लोग इसमें ये खर्चा कर रहे होंगे जस्ट टू मैनेज. ये क्योर नहीं, जस्ट टू मैनेज द डिजीज दैट यू आर इनटू. डॉक्टर फी ये ईयरली फिगर. So doctor fee could be ranging from 6,000 to 12,000 depending on the kind of doctor and the specialist that you are consulting. If you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 could be going towards physiotherapy. And if you are taking allopathy or any kind of medicine, that could all be costing you another 15,000 to 30,000. And if you total all of these, 33,000 to 72,000, you could be spending every year just to manage the disease. And if you are into allopathic treatment, then we all know the side effects. So we will not talk about that here so much. So just to give a perspective as to how much we are already spending and how much this therapy will cost, you can compare.
And it's also important to discuss who this program is not for, so that it becomes clear who this program is for. Let's see. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. Why we say this is that normally people are looking for a magic pill कि कोई दवाई मिल जाए जिससे हम एकदम से ठीक हो जाए. अगर ऐसा होता तो काफी लोग ऑलरेडी ठीक हो चुके होते. बट जैसा कि आप देखते हैं, जितना वैसे तो बोलते हैं मॉडर्न साइंस प्रोग्रेस है, बट इज इट? मोर द मेडिसिन मोर इज द डिजीज. वो बढ़ ही रही है. एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग ओनली. और मैजिक पिल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब से बचपन से, if you look around in your family also, whenever a child gets a little bit of cough or cold, we just take the kid to the doctor, and then some syrup is given, and we don't allow the body to fight the disease, right? So at the slightest instant, we just pop a pill. और ये आदत बन चुकी है हमारी. This has become a habit because it's been going on from childhood only. वैक्सीनेशन का इट्स बहुत लंबा चार्ट मिलता है. यू आर पुटिंग केमिकल्स राइट फ्रॉम द चाइल्ड्स बर्थ टिल समवन गोज टू द ग्रेव. सो ये पूरा एक यू कैन कॉल इट समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे स्वामी जी बोलते हैं, इट्स अ केमिकल, बट व्हाई आर वी पुटिंग इट इनटू आवर बॉडीज? So common sense, like Swamiji said in the video. So this is not a magic pill, okay? And you won't get the results tomorrow. Some people do get tomorrow, but not, we are not promising that. And this is not for those who are not ready to work on the body. Why? Because every day you'll be requiring 80 to 90 minutes to do all the kriyas and to work on your body, on your system, strengthening the internal organs. So if you are so busy and you can't even spend 80 to 90 minutes, then this program is not for you. And this is not for who are for those who are impatient. We understand that when you are in pain and there's a lot of disease in the body, the patience goes down. But still, we'd like to say that please be patient. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to elaborate this point in a slight detail. We advertise on the Facebook page that this is free webinar, but many people misunderstand, thinking that the treatment is free. The treatment is not free. This webinar which you are attending right now is free because it's an introduction to Ashtaang Chikitsa. ये Ashtaang Chikitsa का एक introductory webinar है जो कि free है. जो treatment है 9 weeks का जो therapy है, that is not free. So just please don't ask me again that you said the treatment is free, the webinar is free, treatment is not. Please make a point of this. And then this is also not for people who are just looking for some tips, because any kind of healing or any kind of treatment does not happen through tips. Because if that was the case, there are thousands and thousands of videos on YouTube, and there are thousands and thousands of experts giving you some tips. So you can just go to YouTube and sort it out. But no, this is not that. This is not some tip giving webinar or treatment. Now, let's get to know what you get inside the program. Very interesting, and you'll be amazed at what it's there. The point one is प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. प्राण शक्ति डायग्नोसिस जिससे बीमारी की जड़ पता कर पाते हैं स्वामी जी, ये डायग्नोसिस होता है. दिस अलोन कुड बी वर्थ द होल फी ऑफ द प्रोग्राम. सिर्फ इसी की अगर एक कॉस्ट निकाली जाए, पूरा प्रोग्राम की जो फी है वो सिर्फ एक डायग्नोसिस का भी हो सकता है. बिकॉज नॉट many therapies are there which know how to find the root cause. Okay, so what is this? I'd like to elaborate on this a bit. This, first of all, this is a non-medical diagnosis and this is an online diagnosis. Both are new things to you. What exactly it is? You'll get a form in which there'll be some questions and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाएगा अपनी सांस के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर. And then you have to note those down in the form. Second thing that you'll be doing in this form is you'll be writing about your problem in detail. And the third thing which you'll be doing is you'll be uploading your selfie photographs, shoulder and above, in which the face is clearly visible. But there has to be no specs. चश्मा नहीं होना चाहिए आंख पर.
And in case of ladies, no makeup also. So when these three things reach Swamiji, he is able to determine the weak force. If you remember in the video just now which was played, Swamiji talks about the 84 forces. So which force out of those 84 forces has become weak, due to which you landed in your current situation, that Swamiji is able to determine. इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस से स्वामी जी 84 फोर्सेस में से जो कौन सी फोर्स वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, उसका पता लगा पाते हैं और उसके आधार पर आपकी क्रियाओं को फाइन ट्यून किया जाता है, जो ये पॉइंट मैं आप थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा वीकली वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 minutes. Why 60 to 90 minutes? 16 is the actual duration. Then we take up question. 60 मिनट की जो अवधि है वो क्लास की अवधि होती है। उसके बाद आपके सवाल लिए जाते हैं क्लास में, आप हमारे जो मेंटर्स हैं वो आंसर करते हैं, वो जवाब देते हैं, आपकी डाउट्स को क्लियर करते हैं क्लास के अंदर ही। सो वो उसमें 20-30 मिनट और लग जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी से 60 to 90 minutes. Same is for practice class also, 60 to 90 minutes. What is the difference? In the main class, the instructor will demonstrate the kriyas. मेन क्लास के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कौन सी क्रिया कैसे की जाती है, और कुछ वीडियोस प्ले किए जाते हैं स्वामी जी के बेहतर जानकारी के लिए और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। प्रैक्टिस क्लास में क्या होता है, प्रैक्टिस क्लास में आपको कैमरा ऑन रखना होता है, दैट इज कंपल्सरी, सो दैट हमारे जो मेंटर्स हैं वो देख सकें कि आप किस तरीके से क्रियाएं कर रहे हैं, और आपको अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आपको वहीं पर करेक्ट वो करने वाले हैं। सो थोड़ा ये डिफरेंस है इसमें प्रैक्टिस और मेन क्लास में। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months. व्हाट इज दिस ऑनलाइन कोर्स एक्सेस? जैसा कि मैं बता चुका हूं, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग एक अवेलेबल कराई जाती है थ्रू अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो ये आपका जो एक्सेस होता है, जो आईडी और लॉगिन आईडी क्रिएट की जाती है, आप 6 महीने तक रहती है आपके पास। 10 हफ्ते बाद आपका प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद 6 महीने तक आपके पास ये एक्सेस रहता है। 6 months इज इनफ टाइम टू लर्न ऑल द क्रियाज बाय हार्ट। इनफैक्ट इफ यू डू द क्रियाज डेली, 2-3 months your muscle memory will build up, and then you'll be able to remember. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration, 90 minutes or so. But the videos of all kriyas will be separate videos of each kriya. Let's say some kriya may take 2 minutes, some may take 5, 10, 20 minutes. So you, instead of watching the whole duration, which is of 90 minutes of the class, you don't have to spend so much time there. You just play that video of a particular kriya and just see how it is done, just to make things easier for you. Then you get instruction in English and Hindi. हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश आपको मिलते हैं। Private WhatsApp group to ask doubts, question. This is the support group. As soon as you enroll, you'll be added to this WhatsApp group or the class group. Like 2 days of the week, you'll be live with us in the main class and the practice class. The remaining 5 days, when you are practicing on your own, and if you have any doubt that time, if any question related to any kriya, so this is the group that you'll be asking your question or doubt in. Our mentors are there in the class, so they'll answer all your doubts, questions, and guide you step by step. तो ये जो ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या क्लास ग्रुप, इसके अंदर आपको जो भी सवाल है, जो भी क्रियाओं से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट होता है, ये इसके अंदर आपने पूछना है क्लास ग्रुप के अंदर। हमारे मेंटर्स आपको जवाब देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। उसके अलावा इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड फीडबैक। हम आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा छोटा सा, ताकि हम पता लगा पाए कि अगर आप नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो किस वजह से नहीं हो रही है। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग इज देयर इन द प्रोग्राम। देन थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th week. This is very important and related to the first point. If you remember the first point, Pran Shakti diagnosis, in the 10th week, therapy or the kriyas will be customized and fine-tuned in the 10th week based on the diagnosis. Why in the 10th week? एक सवाल आता है ना कि 10th week में क्यों होती है कस्टमाइजेशन या क्रियाओं को फाइन ट्यून क्यों किया जाता है? What happens is in these 9 weeks there are 3 main things. A lot of things are done, but mainly 3 things that are done. The first is the Vata, Pitta and Kapha of the body is balanced. शरीर का वात, पित्त और कफ बैलेंस किया जाता है, वो एक पहली चीज है। दूसरा,
You are taught controlled exhalation. आपको कंट्रोल्ड एक्सलेशन सिखाया जाता है इन 9 हफ्ते में, और यही वजह है अगर आप कपालभाति करते हैं उसको मना किया जाता है. इफ यू आर इनटू कपालभाति, इफ यू डू कपालभाति ऑन अ डेली बेसिस, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डू इट फॉर 5 to 6 months, बिकॉज कपालभाति में क्या होता है, इन कपालभाति दैट इज फोर्स्ड एक्सलेशन, बट हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू teach you is controlled exhalation. Okay, so that's why kapalbhati is you know, not allowed during the 5 to 6 months. The third important thing that happens is that there are 3 basic alignments of the body, like Swamiji talked about it in the video also. The thighs, navel, and the chest. These are balanced, because a lot of problems occur because there is structural imbalance or misalignment. So when these 3 things happen in these 9 weeks, then the body is ready to receive the customized kriyas or the customized therapy, right? Then last point, extended support for 30 days after the program is over. After the 10 weeks, you still get 30 days with us live, asking any question, any doubt, because we understand that sometimes many people just are not able to attend all the classes because of maybe some illness or some other reason. So still there are 30 days, and this is inclusive in the fee only. Nothing extra is charged. I've already talked about all these points. Now the program fee, which a lot of you may be waiting for, 14,500, including everything, all the 10 points, the therapy customization, classes, and Pran Shakti diagnosis, support, everything. But like I promised that there'll be a special webinar pricing for people who are still here. What is that? Just 6,500 for the complete program, including all the 10 points I just talked about. So this has been made so affordable. Maximum people can take advantage of this. And this is because this is a highly discounted fee. This is valid till 1st April till 12:30 p.m. only. Now, how to enroll? You pay the program fee, that's the step 1. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. As soon as you make the payment, please share in the WhatsApp group. Our team is there, so they'll confirm your payment and they'll send you further instructions on your personal chat. Step 3 is to fill the participant onboarding form that you'll get on your personal chat after making the payment. Step 4 is to join the class WhatsApp group, which I talked about, where you'll get the support on a daily basis, where you can ask a question, which I just told you. And then step 5 is to start attending classes to learn Ashtaang Chikitsa. Simple 5-step process. Payment details will be shared in the chat as well as in WhatsApp group. And then I'll just like to stop here and talk about the super team that we have at your service. And we don't call ourselves a super team. Our participants call us because the kind of support they receive, which they have never expected out of an online program. We have Rachna Shrimal Bothra. She's the program director and the host of this webinar. Then we have Shalini Bhagwat. She's the class manager. She takes care of the batches, timings, and everything. Ashwini Kumar is the IT manager. Then we have mentors, Ranjana, R.D. Gupta ji, Soni, Aruna, Neena, Suruchi, Arundhati, Meera, Sushma, and then we have Kishore. We have so many mentors because we understand this is an online program, and sometimes things are not so easy on an online program, and especially for people who are elderly people, not so much comfortable with technology. So enough mentors are there, they can guide you step by step. They're very really patient mentors, because we understand that the kind of condition many people have, they're not into a condition where they can do things easily. So we have proper team of mentors. Then we have Neha Upadhyay. She's the enrollment teacher. She'll be the person who you'll be talking to the most before enrolling in the program. Then Anil Chauhan, that's me. I am the WhatsApp admin. Any questions that you have, please type in the WhatsApp group, because there we'll answer each and every question in great detail for you, so that you can easily read it and get answer to your query or your doubts. Himanshu Reddy, he's the technical person. He's in charge of uploading all the videos, the written instructions, and then helping you with installing the app, which you can download onto your phone and watch the videos inside the app only. So he's the person who will be helping you out in case you have any difficulty with the technical part. And then Anita ji, she's the personal support person.
She calls 20-25 people every day to know if the program is going on pretty well, if there's any problem you're facing. So she's the person from whom you'll be getting a call also. So overall, we've taken every step to make this program, uh, work efficiently for most of the people. And this is the last part of the presentation, and I'm through with this. And I'd like to thank you for listening patiently to me. And I hand over the presentation back to Rachna ji. Namaskar. You are on mute. Thank you so much for sharing the program details. So we have come to the last part of the webinar. So as Anilji said, that you can share your questions in the webinar group and we will get back to you on details about it. Some people have asked their question like Neelam Narsinghani ma'am, if we miss any session, what happens? As Anilji was saying in his presentation, you get the video recording and the PDF from our end, which is going to be with you even post the class. And 1 month after that, you get everything. So even if you miss something, you're actually not missing anything. And the mentors definitely recollect the previous class before starting the new class. Kavita Gosen ma'am wants the payment link in the WhatsApp group that we will be sending shortly. So nothing that you really need to note down. Everything will be shared in the webinar group. So just give us some time. Once this webinar is done with, we will definitely share the questions. Juhi Banerjee ma'am is talking about duration of classes. So I just repeat again, Anilji has already shared in his presentation, 60 to 90 minutes is the duration of one class. Because we have to answer the queries of various participants of various age, and they are in some problem or in some pain. And since it's an online class, so sometimes we do take some more time to give clarity to the participants. Meena ma'am talks about sciatica in my right leg. So sciatica can easily be resolved by Ashtaang Chikitsa. It is the pinching of the piriformis nerve. It is nothing but the pinching of the piriformis nerve, which can be easily resolved. कुछ alignment issues होते हैं हमारे body में. 3 तरह की alignment है जो misalign होती है. कौड़ी, नले और नाभि. नाभि सभी जानते हैं. कौड़ी और नले नले यानी कि थाइस का मिसअलाइनमेंट. तो इन मिसअलाइनमेंट के वजह से भी कभी कभी साइटिका होता है. तो हमारे प्रोग्राम में हम लोग ये अलाइनमेंट करवा के लेते हैं, जिससे आपको साइटिका में भी रिलीफ मिलता है. नहीं तो और कोई भी थेरेपी में साइटिका का कोई इलाज नहीं है. So overweight, we do have a program called Ameda. So you can connect for that also if you want for weight. Okay. Any other questions that I could answer? Otherwise, you can write in the webinar group. No problem with that. Okay, somebody is writing about, I'm going out of town from 7 to 14th April. I can't join from there. By any chance, you have a second batch starting after 15? We have a batch starting every Monday. Every Monday, we start a new batch. So don't worry, ma'am, but the seats are limited. So it's always better to book beforehand, because if the seats are filled, we will not be able to accommodate you. So what many participants do is that they book their seat and they tell the enrollment expert, that is Neha, that please enroll me, but I will start my class on so and so day. So you can always do that. Neelam ma'am, I am diabetic. So we are not running a diabetic program per se, but many people have got relief in that, in diabetes as well. Our sister concern runs the diabetes program.
Okay, I have mobile, so how you will see me doing correctly, Indira ma'am? See, it's always better to be on the laptop. Mobile से थोड़ा difficult तो हो जाता है. So it is, or if you have a tab, that could also work. But because it's an online session and we really need to see you, the mentors need to see you. That's why we keep requesting everybody to keep their cameras on. एंड ऑल्सो ब्रीदिंग. यस, ब्रीदिंग तो देखिए आपको खुद ही करना है. हम लोग सिर्फ आपको बताएंगे कि आपको हाथ का पोजीशन किधर रखना है, ब्रीदिंग कैसे करना है, होल्ड करना है कहाँ पर, कौन से आपको बंद लगाने. एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय आवर मेंटर्स. ओके, आई हैव वन मोर प्रॉब्लम. शेंजिन गिर जाती है. शेंजिन गिर जाती है. Shenzhen. Indira ma'am, can you unmute and please tell me? I'm not very clear as to what this means. Shenzhen. अच्छा अच्छा, चीजें गिर जाती है. ओके ओके ओके. Item गिर जाती है. Okay okay. So this could purely be because of weakness, that in your hands you don't have the strength enough. तो आपको उसमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करना पड़ेगा, जो हमारे अष्टांग चिकित्सा में कंप्लीट प्रोग्राम में होता ही होता है. तो इसमें रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ हम लोग बिल्ड करते हैं. सो अष्टांग चिकित्सा आप जैसे ही करोगे आपको चेंजेस नजर आए. Rajendra Prasad sir talks about foot drop. So foot drop, we've in fact got an orthopedic doctor who has got healed of foot drop. तो फुट ड्रॉप एक बेसिकली न्यूरो डिजेनरेशन है जो आराम से हील होता है अष्टांग में. I travel often. How to manage the program? Naresh sir, आप अगर travel करते हो तो the only thing is you have to see the video recording and the PDF and have to practice wherever you are. And whenever you have problems, our mentors will help you out. Should I continue with physiotherapy alongside the program? Ma'am, initially we don't tell any of our participants to stop medicines or physiotherapy. आप जैसे जैसे program में आगे बढ़ते हो, you see the relief and you automatically stop your physiotherapy or your medicines. तो वो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, जैसा कि अभिनव सर ने बताया कि पेन, स्टिफनेस सब में फर्क पड़ता है. तो दैट वी विल नॉट सजेस्ट यू इमीडिएटली कि आप कुछ भी रोको. Any other question? I have osteoarthritis and back pain with sciatica. Sciatica I've already explained. Osteoarthritis, again a degenerative disease. Back pain can be for a lot of reasons. तो ये जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है. सो दिस इज इजिली हील्ड इन अष्टांग चिकित्सा. इनफैक्ट द फोर्टे ऑफ अष्टांग चिकित्सा इज द जॉइंट पेन, जो बहुत कॉमन है आज. नी पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर. Indira ma'am writes about a knee fracture. Okay. Okay, knee fracture. तो मैम उसमें आपको थोड़ा हीलिंग करने के बाद ही आप क्रियाएं कर सकते हो. तो हाल फिलहाल आप ज्वाइन करते हो तो यू कैन डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज. Biswajit sir talks about bloody constipation. Okay. So, sir, these are all things which is, metabolic problems, digestion problems. जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 3 alignments are there in the body. One is the navel, नाभि जो होता है, तो उसका जब हम लोग alignment ठीक करते हैं, तो उससे constipation भी ठीक हो जाता है. And we make you do particular kriyas. So what we have seen in the past is that many people have got rid of their constipation. I asked dropping things. Vat and Pith, many types of food knowledge given not to eat. And timings. Sir, timings, you want to know of the classes? Okay, iPhone, I don't know whether whatever your name is, I have meniscus tear in my left knee. So meniscus tear is a very, very common problem.
with the knee pain. So this would take some time, but definitely gets resolved in Ashtang Chikitsa. Okay, Snigdha ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. Snigdha ma'am. Snigdha ma'am, please unmute yourself. I'll just be taking up some questions, people who have raised their hands. Snigdha ma'am, can you please ask your question? Hello, can I ask my question? Yes, definitely you can. Yes, ma'am, my both knee got replaced. Still, I Okay. get knee pains. I had fallen down, so I have a back pain. And because of diabetes, I got neuropathy and CKD. CKD means my kidney is not functioning properly, and glaucoma, and also my imbalance of my walking. And I got hypertension also. So even my बैलेंस भी बॉडी का नहीं बन पाता. मैं चलती हूँ तो थोड़ा टेढ़े से चलती हूँ, डर लगता है कि गिर ना जाऊं, क्योंकि एक बार गिर चुकी हूँ. और पाँव भी थोड़े बाहर को खुलते हैं, मतलब सीधे स्ट्रेट नहीं रहते हैं. तो ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो सकती हैं? देखिए, आपका जो इम्बैलेंस का इशू है, जो आप गिर जाते हो, आपका बैलेंस नहीं रहता है, और आपका जो बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है आपको, राइट? तो हाँ. और आपको ब्लड प्रेशर भी आपने बोला. हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी है और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम भी है. हाँ, तो आपकी किडनी और जो ये बैलेंस का इश्यूज है, ये तो आपका अष्टांग में आराम से हील होगा. बट आपका जो बीपी और डायबिटीज है, इसके लिए हमारे सिस्टर कंसर्न है, उनका प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा. तो मेरा सजेशन ऐसा है, आइदर आप जब अष्टांग करना चाहते हो तो पहले अष्टांग कर लो, तो उसमें आपका ये सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएगा. और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज और बीपी भी नॉर्मल हुआ है, तो आपको दूसरा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं. बट जैसा कि मैंने बोला, ये हमारा मेन फोकस नहीं है. हमारा मेन फोकस है जॉइंट पेन. तो इसके लिए आप यहाँ आराम से ज्वाइन कर सकते हो और लाभ उठा सकते हो. न्यूरोपैथी भी ठीक हो जाएगा? न्यूरोपैथी? हाँ, डायबिटीज पर आपको उसके लिए डायबिटीज पे थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा ना काम. हाँ, मेडिसिन और डाइट तो कर रही हूँ डायबिटीज के लिए. हाँ, बट हम लोग के यहाँ पर देखिए, मेडिसिन नहीं, हम लोग इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं. आपके जो ऑर्गन्स वीक हो गए हैं ना, हम उस पे फोकस करते हैं, क्योंकि बाहर की चीजें तो सब ले रहे हैं, बट उससे फर्क सिर्फ टेम्पररी पड़ता है. जब आप आपके अंदर के ताकत को बढ़ाते हो, जब वो एपिजेनेटिक ट्रिगर देते हो, तब वो जाके ऑर्गन सही काम करता है. तो वो एक ब्रेथ रेशियो देते हैं स्वामी जी, जिसके हिसाब से आपका जहां वीक पॉइंट है वो कस्टमाइज करते हैं, और उस हिसाब से जब आप करना शुरू करते हो तो आपका सिस्टम ठीक काम करता है. दूसरा प्रोग्राम कौन सा है? आप मैम वेबिनार के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, तो हम लोग आपको उसका भी बता देंगे कि डायबिटीज के लिए कौन सा प्रोग्राम करना है. Can you do a customized program for me so that I can do one-on-one? Oh, you want to do one-on-one? Okay. So, Yeah. Sarita ma'am, can you please leave your number or write in the webinar group, and our admin people will definitely connect with you. Yeah, because since I have so many issues, I Okay. really need personal attention, right? No worries, ma'am. We'll definitely look into it. तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दो, एंड हमारे ओर से, हमारी टीम से कोई ना कोई आपसे कनेक्ट करेगा. ओके. मैंने वो चैट ग्रुप में पहले भी नाम लिखा था और टेलीफोन नंबर, पर आपने मेरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा. आई एम सो सॉरी मैम, हो सकता है मेरे से मिस हो गया होगा. ऑल अपॉलॉजीज फॉर दैट. तो आपका क्या क्वेश्चन था, फिर से थोड़ा बताएंगे? सरिता नरूला और 9818
नहीं, वो नंबर आप अगर लिख दोगे ना, तो हमारी जो एनरोलमेंट एक्सपर्ट है वो आपका नंबर लिख लेगी और जो भी आपकी क्वेरी है वो आंसर कर देगी। हाँ, मैंने आपको रचना है ना आपका नाम, हाँ हाँ, तो मैंने आपके पर्सनल विंडो पे चैट में डाला है, देखिए आपको मिला है। अच्छा, पर्सनल विंडो पे? मतलब रचना को भेजा है मैंने। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आया है। तो मैं कहाँ आप डालूं, कहाँ पे? आप अपना नंबर बता, नेहा, कैन यू मेक अ नोट ऑफ इट प्लीज? हेलो एक नेहा, माय मिनट, नंबर आप अगर आप बता दीजिए नंबर, मैं नोट कर लेती हूँ। 98 एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। Yes, ma'am. Tell me. 98 हाँ, 182 Hmm. 05 Hmm. 623। Okay, ma'am. Okay. Can I repeat? नेहा, एक बार नंबर रिपीट कर दो प्लीज, ताकि क्लैरिफाई हो जाए सही नंबर नोट हुआ है। Can I repeat the Nine number? eight one. हाँ, ये बोलिए। 98182। सरिता मैम, एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए तो हम लोग डबल चेक कर लेंगे। 98182 05623। okay, ma'am. Okay. 05623, ठीक हाँ है, जी, ओके। प्लीज। थैंक यू सो हाँ, मच 0, मैम फॉर योर हेल्प। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यस प्रभुता मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, good evening. And गुड I just इवनिंग, want to नमस्ते। know one thing. नमस्ते। एक क्वेश्चन है, पहला तो पूरा बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती है, बहुत दर्द रहता है और एनर्जी लेवल 0 है। तो और दूसरा मुझे ये पूछना है कि अगर वो, लेकिन आपने आंसर कर दिया कि अगर मिस करते हैं एक क्लास तो कैसे उसको ज्वाइन करें, दैट यू हैव ऑलरेडी answered. Thank you for that. And one more thing I want to ask, your programs is always online or offline also you are having? एक्चुअली मैम अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही है, सो वी आर लुकिंग इनटू एक्सपेंशन, सो धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन भी खोलेंगे। अभी हाल Okay. फिलहाल तो ऑनलाइन ही है, बिकॉज ऑनलाइन से होता क्या है ना, वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल और थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है, एंड इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। स्पेशली जो लोग सीनियर सिटीजन है, उनको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, सो दे कैन आराम से take the benefit of this program. That's the Yeah, reason. that's true. But you know, those who want to join you as means in a class and all that. So for them, I'm just asking for that only. You don't have right उसके now, लिए or no, right which now we all, don't have. which all cities you are having the branches where people can go and attend a class offline. तो ऑफलाइन का वही मैंने बताया, ऑफलाइन का अभी हमारा बात चल रहा है, सो Oh, ऑफलाइन okay. वी हैव नॉट ओपनड एज ऑफ नाउ। Okay, no problem. This was the Yeah, question I just wanted to ask. Thank you very much. thank you. Yes, any other queries? Yes, Rajni Rawat, you can unmute and ask your question. हेलो मैम। Yes. मैम मुझे पूरे जॉइंट पेन रहता बहुत ज्यादा, नी और हिल और एल्बो में भी बहुत ज्यादा, और मुझे ठंडी और गर्मी की बहुत प्रॉब्लम है। हल्का सा भी कुछ गर्म चीज खा लूं तो पूरा मुंह सूखना, सिर दर्द होना, और थोड़ी भी ठंडी चीज खा ली ठंडा हो गया तो पूरे जॉइंट पेन, पूरा बॉडी पेन, मतलब क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। क्या इसमें संभव है ये हो तो जाए ये सही? कहीं ना कहीं कोई आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस है, गर्मी और जो ठंडा लगता है और जो हाँ जी, बहुत। पेन्स है, तो उसके लिए कुछ तो आपका अलाइनमेंट भी इश्यूज होगा, डिजेनरेशन होगा, एज के हिसाब से भी अपना औरतों का डिजेनरेशन तो होता ही है ना आफ्टर मेनोपॉज। तो उसके लिए आप प्रोग्राम ज्वाइन करिए और इससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट हो जाएगा।
हाँ मेरे हाँ को 100%, बट ओके आपको करना पड़ेगा। देखिए, खाली मैम, आप ओके पैसे डाल के ज्वाइन करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको करेंगे मैम। पूरी शिद्दत से प्रोग्राम अटेंड करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? तो अगर ओके आपके मन में वो है कि मैं प्रैक्टिस करूंगी तब ज्वाइन करिए, नहीं तो नहीं ओके Hello, ओके can मैम, I ask a question, please, थैंक यू about यस the यस class timing? Hello. About the class यस। Hello. Can I timings? ask question, Can I please? please take one question at a time? Okay. Ma'am, I Yeah. also want to Yes. talk. Yeah, let me just, there are 3 hands raised. So the lady, I don't know your name, but whoever This is asked me Rajlakshmi. first, huh? Yeah, I'm this is Nirmala. Can Rajlakshmi. I talk to you, please? Nirmala Okay, Samvani. Nirmala ma'am, ask your question. I'll take the rest of the questions later. Yeah. Ma'am, See, Indra, I'm 79 years old, and I want Okay. to know if I can join. I have knee problem, then I have urticaria, and Okay. mainly these are the two problems I have. And also my nose and everything dries up because of that. So when I'm breathing, it's like I have to force sometimes. But I can do kumbhak and all. So I want to know if I can join at 79. Ma'am, age is no barrier till the time हम सांस ले रहे हैं, आप कुंभक Okay. कर सकती हो. So we And have knee में people मेरे को even knee 80 plus जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं. तो आप ऐसा मत Okay. सोचिए कि आपका एज है तो आप नहीं कर सकते हो. आप No, I डेफिनेटली just कर wanted सकते to हो. ask if I'm allowed to. And secondly, I have Yes, yes. knee problem which doctor has asked me to do. It's bone on bone, so they are saying to do the knee surgery, and I have a lot of problem. So I will be able to do. I want to know if it's only breathing and also I can do that on the bed. मैम सी, जब हम लोग न्यूरोमस्कुलर का बात करते हैं ना, तो कुछ हाँ. मूवमेंट जरूरी होती है. जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं आपको वॉकिंग करना है, आपको चलना है, तो बॉडी Hmm. को आपको हिलाना पड़ता है, नहीं तो ये मसल्स जो है ना वो बैठ जाते हैं. तो सिमिलरली अष्टांग चिकित्सा में मूवमेंट्स है, बट आपको वो सिखाया जाएगा कैसे करना है और आप अपने हिसाब से करोगे. मेनली आपको जो Okay, कुंभक थेरेपी सिखाया जाएगा वो मेन है, that will जिससे आप help. इंटर्न, यस दैट विल डेफिनेटली हेल्प. क्योंकि होता क्या है, एज के लिए या उनको प्रॉब्लम है, तो बहुत लोग जो मूवमेंट्स है वो नहीं कर पाते. तो हम ऐसा बोलते हैं कि आप कुंभक थेरेपी करिए, उससे जब आपका स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगा तब आप मूवमेंट्स किया करिए. Then I can. ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो ऐसे Ma'am, Okay, I've thank you. earlier asked this ma'am, मैं question. पूछूं एक question? What are the class Hello. timings? Hello, Can I we am please Nageshwari. have one question? Okay, What are the Rajeshwari, class please timings? ask your question. Nageshwari. Okay, Nageshwari, you can ask your question. I don't know Hindi. I will speak in English. Okay. Neha, can you please mute everybody? Hello. Excuse me, people I am. are here to ask questions. जिसको question नहीं पूछना है, please थोड़ा silence रखिए. Hello. Please unmute. Yes. Your name, please? I'm Nageshwari. Yes, I tell me. have neck pain. I have neck pain. Okay. I have neck pain. My, Okay. I mean, skin and all, somewhat, I don't know how to say, spondylosis, I think. No? Okay. Okay. So I don't know So- what to do for this. And Okay. meanwhile, when I have the neck pain, when I am in more tension, no, my head is rotating. My Okay. head is shaking. Okay. My head is So shaking. this That is is the problem for me. okay. So this is basically stress and anxiety which you're facing, and the neck issue could be due to compression or some kind of imbalance. So the thing is, in Ashtang Chikitsa, these are the things which we actually heal. So, ma'am, if you join Ashtang Chikitsa, definitely you'll get some relief in your head spinning also, because the
peace inside also gets built up. You start feeling happy, your energy level changes. So lot of benefits you receive, not only the physical pain, you won't find only changes in the physical pain, but anxiety, stress, everything will be relieved with Ashtang Chikitsa. So I would Okay, ma'am. suggest you join the program. Huh? Okay, ma'am. But in the Okay. meanwhile, I'm taking acupuncture treatment. You can take it, no problem with that. No, it will cure. I want to ask. Ma'am, I can't, comment on anybody else's therapy. I can just talk about my therapy, right? Okay. I agree, ma'am. But how to join everything? You give the sketch. Okay. I want to join, but how to join and all, you give the thing. Yeah, ma'am, all that will be shared in the webinar group. So after the webinar is over, definitely, or maybe they have already shared the payment details and stuff. So you'll get it there. Don't worry. This is inside Chennai or out of city? No, this is only online. It is not in any particular city. We are connected with the whole world because participants are joining from any part of the world. Okay. Only online treatment. Yes, only online. This is Zoom meeting, no? Yes, Zoom meeting. Because I was out because due to Sri Rama Namani, I was in temple. I forgot the whole thing. Just now I opened the thing. So No I worries, am the last. If you have any questions, even after this, you can write in the webinar group and our team will definitely answer to you. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. So one last question we'll take up. There are 4 hands raised. So one person can ask their question, please. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I first Your name, मेरे को please. थोड़ा इंदिरा. Okay. मैम मैंने मुझे तो आपका हाइपरटेंशन क्वेश्चन शायद आंसर किया है. मैम बहुत सारे क्वेश्चंस है. एक तो ना अभी जैसे एक जन ने बोला ना बीपी का, आपने भी बोला कि वो ब्रीदिंग वाला चीज. तो मुझे क्या है ना हाई बीपी है, तो मुझे बोला गया है कि मुझे ब्रीथ रोकना नहीं है. और मतलब मैंने भी रियलाइज किया कि ब्रीथ रोकने से मेरे थोड़ा टमी में थोड़ा हेवीनेस और बहुत अनईजी सा लगता है मेरे को. तो ना कुंभक में तो ब्रीथ को रोकना पड़ता है ना मैम, तो वो क्या मैं करने से मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, बीपी और हाई नहीं होगा? मैम हमारे जो सिस्टर कंसर्न है ना, वो वहां पर बीपी रिवर्स करते हैं लोग, बीपी का टैबलेट छोड़ रहे हैं और सेम कुंभक पद्धति से वहां पे वो सांस रोकते ही है. तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, जितना आपसे बन पड़े उतना रोकना है. जब आप बॉडी को फोर्स करते हो रोकने के लिए, तब आप प्रॉब्लम में आते हो, उसके पहले नहीं. हाँ मतलब मैं वही फोर्स कब तक मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैं एक बार रोकती हूँ ना मैम, थोड़े से सेकंड के लिए रोक पाती, उसके बाद तो मेरा छूट जाता है खुद से और उसके बाद ऐसे लगता है बहुत देर तक कुछ हो गया बहुत. नहीं, वो थोड़ा आपका साइकोलॉजिकल भी होगा. तो आपको पता नहीं पड़ रहा होगा, आप जबरदस्ती बॉडी से ज्यादा करवा रहे होगे. थोड़ा थोड़ा करना है, धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और धीरे धीरे आप होल्ड पे भी थोड़ा काबू पा सकते हो. क्योंकि मैम मैं जब स्विमिंग करती थी ना, तो मैं मुंह अंदर रखती थी ना, तो मैं ज्यादा देर रह ही नहीं पाती थी. मेरे से यही होता है मैम, मैं ब्रीथ ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती हूँ. लेकिन वही ब्रीथ में कब होल्ड कर पाती हूँ, जब मैं कुछ जैसे ओम ऐसे वाला जो होता है ना, वो मैं काफी देर तक कर लूंगी. लेकिन एक ब्रीथ को होल्ड करके टमी को अंदर वो फील करने वाला चीज जो होता है, वो चीज मेरे से मैंने पहले भी किया है ट्राई, होता नहीं है मैम. नहीं, ऐसा बात नहीं है. हमारे मेंटर्स आपको उस तरीके से सिखाएंगे कि अल्टीमेटली आपको धीरे धीरे होने लगेगा. आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये जो कुंभक है ना, बहुत पावरफुल टेक्निक है. तो ये हर कोई नहीं करवा सकता है. तो हर कोई नहीं करवा सकते, तो अगर मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आई कैन डू ना मैम, मतलब मेरे पॉसिबल है आप ना? कर सकते हो ना. हमने अभी तो एक 79 ईयर ओल्ड लेडी को बताया कि प्रॉब्लम्स छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ज्वाइन करके ना आप फील करिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है.
हम आपके ओके। सामने वो अभिनव सर आए, उन्होंने हाँ, हाँ। बताया कि किस तरह से धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मैम मैम मुझे एक भी प्रॉब्लम है। वो मैंने एक बात पूछी थी ना आपसे, वो चीजें गिर जाती है, ड्रॉपिंग थिंग्स, वो मैंने ना हाँ। मतलब ऐसे देखा था एक मतलब वो सप्लीमेंट वाले भी, मतलब आजकल एक पलक नोट्स बोल के है, उन लोग भी बहुत ऐसे सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, तो उन्होंने नर्व पेन, सियाटिका, जो जो मेरी सारी इश्यूज है वो प्लस फुट ड्रॉप एंड प्लस ना ड्रॉपिंग थिंग्स था, तो उसमें उन्होंने ऐसे नर्व जॉइंट का मेडिसिन दिया था। तो मैंने ये मेरे हाथों से चीजें काफी, मतलब इट्स बीन लाइक लॉन्ग, अब 5-6 साल से मतलब ऐसे होती है कि 5-6 साल से गिरती तो है मेरे हाथों से चीजें। तो मेरे हाथ में तो मुझे नहीं लगता कि कोई वीकनेस है। हाँ, मेरे हाथ शिवर करते हैं, तो वो शायद ब्लड प्रेशर की वजह से या कोई टेंशन की वजह से होती हुई, तो आई डोंट नो, बट मेरे हाथों से चीजें गिरती है। तो आपने बोला ना वीकनेस की वजह से, तो मुझे वीकनेस तो नहीं लगता, ऐसे पता नहीं, हो भी सकता है, बट जहां पे मैंने वो जो सप्लीमेंट्स का जो देखा था ना, उसमें वो सारी लाइन से चीजें थी एंड प्लस 2 मोर चीजें थी, फुट ड्रॉप एंड ड्रॉपिंग थिंग्स ऑल्सो। तो वही मुझे लगा कि ये सारी चीजें तो मेरे में है, तो फिर तभी मेरे अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कमजोरी की वजह से है, या जो कमर में मसल्स वीकनेस है, या बोन प्रॉब्लम है, या स्लिप डिस्क की इश्यूज है, या कोई सर्विक्स इश्यूज है, उसकी वजह से मेरे हाथों से चीजें गिर रही है, पोस्चर ठीक नहीं है, या क्योंकि मैम मेरे हाथों से ऐसे ही गिर जाती है, एकदम हल्की सी चीजें अचानक से ऐसे ही गिर जाएगी, नहीं गिरने के चांसेस भी रहेंगे। तो देखिए मैम, ये आपको समझ में नहीं आएगा एज अ लेमैन, ठीक है, हाँ। क्योंकि ये हम्म। नर्व्स का भी इशू हो सकता है, बेसिकली हम्म। वीकनेस भी हो सकता है। तो जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, स्वामी जी, हाँ, हाँ, आपका, हम लोग पीएचडी भरवाते हैं, उससे वो हाँ, डिटेक्ट करते हैं कि आपका कहाँ पर वीकनेस है, उसको जब हाँ, स्ट्रेंथ मिलता है तो धीरे धीरे आपका ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम सब सॉल्व होता है। कोई भी सप्लीमेंट खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म हाँ, में, भले ही आपको टेम्पररी फर्क पड़ जाए, जब तक हम्म, आप अपना इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते हो वो हाँ। कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो मैम जो सप्लीमेंट और मैं थोड़ा फिजियोथेरेपी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, वो मैं स्टॉप कर दूं या फिर साथ साथ करूं, क्योंकि फिर मैम पता वो कैसे चले। आपके ऊपर है, मैंने पहले ही एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि हाँ। जो भी आप लोग ले रहे हो, इनिशियली हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे कि आप रोको, आपको ठीक लगता है तो आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। Ma'am, this is Anahita. I've been asking you a simple question. Can I know the class timings? Because that is the most important thing. So Neha, could you share the class timings please? 6:30 p.m. twice a Okay, week. 6:30 p.m. twice a week. Okay, thank And you, ma'am. throughout the 9 weeks, it's going to be 6:30 only. Just the Okay. change of days will be there. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. So we've come to Hello, the ma'am. end of the webinar. Yes, somebody हेलो was saying something. Yes. हेलो मैम, राज मोंगिया बोल रही Yes. हूँ। हाँ बोलिए। मैम मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो मेरा वेट भी बहुत लूज हो रहा है। 67 मेरी एज है, 49 मेरा वेट है। इससे इससे हो जाएगा? मैंने वैसे पार्टिसिपेट कर लिया, 3 अप्रैल वाला मैंने ज्वाइन कर लिया क्लास, हो जाएगा? डेफिनेटली आपको गैस्ट्रिक फर्क प्रॉब्लम। तो देखिए पड़ेगा, क्योंकि हमने हाँ अभी जी, थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो नाभि जो है उस पे भी हाँ हम जी, लोग कुछ क्रियाएं करवाते हैं जिससे डाइजेशन इश्यूज, ये जो आपका दूसरा दूसरा प्रॉब्लम सब होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को ब्लोटिंग, हाँ तो उससे क्या हाँ, होता है वो सब रिजॉल्व होती है, ठीक है। ठीक है। वेट तो भी उससे वेट जरूर भी गेन हो जाता है? वेट भी गेन हो जाता है? कुछ कुछ केस में यस वेट गेन होता है, बट हमारा जो वेट गेन या वेट लॉस का बोलिए, हेल्थ गेन का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा अलग है। अमेदा अच्छा, प्रोग्राम है, वो अभी शुरू होने वाला है। ये मेनली अच्छा। जॉइंट पेन के ऊपर फिक फोकस करता है। ओ, फिर मैंने तो इसी में ज्वाइन कर लिया, 3 अप्रैल वाला। कोई बात नहीं, आपका आपने कब ज्वाइन किया है? मैं अभी 3 अप्रैल को मैंने ज्वाइन करना है, मैंने फीस भर दी। अच्छा, 3 अप्रैल को ज्वाइन करना है आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके फिर कर ओके सकती ओके, हूँ मैं उसमें? हाँ आप कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार लिख दो, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पर आपको बता देंगे कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मैंने ठीक है नेहा ना। मैम से बात की थी कल, नेहा मैम से बात करके मैंने फीस भरी है, कहते आप। हाँ ठीक है,
तो क्योंकि ये आप बोले ना कि वेट लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उसके मेरे लिए को मैंने बोला कि जो हेल्थ गेन, और ये जैसे मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं जॉइंट पेन के ऊपर। तो अमेदा अच्छा हमारा एक और प्रोग्राम है जो बेसिकली ओवरऑल हेल्थ के ऊपर है, हेल्थ गेन के ऊपर है, वेट लॉस के ऊपर है। तो जिसको जैसे प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो काम करता है। बट आप ये प्रोग्राम करोगे तो इससे भी सॉल्व होगा, बट आपका अच्छा जो वेट लॉस है वो मेन फोकस नहीं है कि वेट गेन अच्छा। होने वेट का वो। मेरे वीकनेस बड़ी रहती है, टांगों में भी दर्द रहे, थोड़ा सा चल लूं तो टांगों में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द हाँ, तो होती है। आपके लिए फिर ये प्रोग्राम ही सही है, इसीलिए नेहा ने आपको बोला होगा इधर ज्वाइन करिए कि टांगों में दर्द जो है वो सब यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, और आप देखोगे धीरे धीरे हो सकता है आपका हेल्थ भी ठीक हो जाए। ठीक है, फिर मैं ये ज्वाइन कर लूँ ना, ठीक है ना मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ, चलेगा, ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक ओके। ओके, सो थैंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू मैम सो मेरा एक मच। प्रॉब्लम है। नमस्ते मैम, हेलो actually we have come to the नमस्ते end of मैडम। this program. हेलो Yes. मैम This will be नमस्ते the मैम। last question. This will be the last question of the day. अगर इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, प्लीज आप लोग वेबिनार ग्रुप में लिख दीजिए, हम लोग आंसर कर देंगे। ओके? यस। Yes, madam. This is Taruna here. This is regarding I'm having my spondylosis and lumbar spondylosis problem since 30 to 40 years. This can be cured in this program? 100% मैम। अभी हमारे पास कल ही एक टेस्टिमोनी आया। He was suffering from back pain for last 50 years without any relief, and through Kumbhak he got relief. At present, no, So madam, I'm yours is a having a very similar case. bad pulsed shoulder or a muscle tear, but my ear also is paining with that. मेरा left to कान है ना, वो और मेरा shoulder पूरी तरह से दोनों साथ में दर्द होते हैं। वो शूटिंग पेन आता है कान और शोल्डर दोनों में। हाँ, तो वो आपका जैसे आप स्वामी जी आपका कहाँ पर प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट करेंगे, फिर आपको कस्टमाइज कुंभक देंगे। तो जैसे ही आपको कस्टमाइज कुंभक मिलेगा 9 वीक्स के बाद, फिर आप धीरे धीरे देखोगे चेंजेस शुरू हो रहे हैं, एंड मेनी पीपल फाइंड रिलीफ इवन इन दिस 9 वीक्स। ओके बेटा, गॉड ओके, ब्लेस यू। थैंक यू सो Okay, मच। thank you. गुड नाइट, नमस्ते, स्टे वेल, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। एक फॉर क्वेश्चन है ज्वाइनिंग। प्लीज, एक क्वेश्चन मैम प्लीज। प्लीज। नहीं, ये पूछना मैम गैस्ट्रिक मैंने ठीक हो जाएगी इससे प्लीज? मैम मैंने अभी तो आंसर किया। गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगी? गैस्ट्रिक आपको मैंने आपको अभी आंसर किया, अभी ये क्वेश्चन मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया मैम। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक नमस्ते। Thank you. Thank you, Rachna ji. Thank you. Bye. थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।